the webinar. And before we start off, I just want to know if I'm audible to you all. You can put down your answers, yes or no, into the chat box or in the question box, and I will get to know if I'm audible and if my screen is visible to you all. So I request है और आपको मेरी आवाज सही से आ रही है तो जस्ट लेट मी नो. आप चैट बॉक्स में या क्वेश्चन बॉक्स में आप बता सकते हो आवाज आ रही है या नहीं, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द वेबिनार. So I have got some of the responses and I think I'm audible and my screen is also visible. So we will start off with the today's webinar. And as you can see on your screen, today's topic is very interesting. The intraday options trading has always been a very interesting topic to all of us, especially in the post-COVID market. But very few people know the basic technicalities of the intraday options trading, right? Because of that, there is a very low percentage of the profitable traders, correct? जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, स्पेशली इंट्राडे, उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, बट जो उसके टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत कम लोगों को ठीक से समझ में आते हैं. दैट इज द रीजन why there is a very high rate of making losses into the options market, correct? That the basic reason is lack of awareness. So we felt that need, and which is why we have got this topic of intraday options trading, learn the art of precision. Why precision, you will get to know in first 2-3 slides itself. All right, so my name is Sonali Palande. I work as a derivative product strategist in HDFC Securities, and I'll be the speaker for the day. All right, so let's go further. Before going further, as usual, I'll read a standard disclaimer. The content and explanation shared in this webinar are only for information and educational purpose. Stock market trading or investment are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making financial decisions. So let's go further and let's hit the bullseye. What is intraday trading, right? You have heard about probably swing trading, intraday trading, positional trading, BTST, STBT, but इसमें से हम सिर्फ intraday trading के बारे में आज बात करेंगे. So exactly what is intraday trading? Technical terms में intraday trading का criteria क्या है? So intraday trading is a practice of buying and selling of financial assets like stocks within the same trading day. अब सेम ट्रेडिंग डे मतलब क्या होता है कि सुबह जब भी मार्केट शुरू होता है वहां से लेकर बंद होने तक एक ही दिन में जब भी आप कोई भी पोजीशन ओपन करके मतलब पोजीशन बना के उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं सेम डे में, तो वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग हुआ. इट कैन बी इन स्टॉक, इट कैन बी इन फ्यूचर्स, ऑप्शंस, एनीथिंग. दैट इज योर इंट्राडे ट्रेडिंग. बट अगर आज पोजीशन लेके आप कल स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हुआ, वो आपका बीटीएसटी हुआ, या फिर इट इज काइंड ऑफ अ पोजिशनल ट्रेडिंग. यू आर कैरिंग इट ओवर फर्दर टू द नेक्स्ट डे, राइट? या फिर आपका कोई स्विंग ट्रेडिंग होता है जो आप हफ्ते भर के लिए करते हैं, तो वो अलग है अदर देन द इंट्राडे ट्रेडिंग. ओके, सो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ एक एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड होते हैं. वो क्या है? लेट्स सी. फर्स्ट, एक्टिव मॉनिटरिंग. इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि you try to find out multiple trades, right? The first the first thing you will do when you are an intraday trader is you will set a shorter time frame. Let's say it can be 15 minutes or 5 minutes, 3 minutes, it can be anything based on your trading style, right? But it will be shorter as compared to the positional trader. So that is why on a shorter time frame you will tend to find a lot of trades or a lot of trading opportunities, but it will be shorter time frame opportunities also, right? पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके स्टॉप लॉसेस, आपके टारगेट्स बड़े होते हैं, करेक्ट? बट इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स दोनों भी छोटे होंगे और आपको मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे. So to cover all those multiple trading opportunities, you need to have active monitoring of your screen. All right, next is quick decision making. As I told you that the time frame in intraday trading will be short, correct? So let's say if you have 3 minutes of time frame, so every 3 minutes you are seeing something else on your screen. There is a different candlestick on your screen every third minute, right? So
that fast you should be able to make the decision if you have to take the trade, or if you have to book the trade if you're already into the trade, right? So your decision making also has to be very, very fast. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आपका एनालिसिस कितना भी राइट हो, तब भी छोटे टाइम फ्रेम पर आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है, इट कैन बी समथिंग एल्स ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम, राइट? सो उसके वजह से यू शुड हैव अ वेरी टाइट रिस्क मैनेजमेंट और वेरी टाइट स्टॉप लॉसेस whenever you're trading for the intraday. And the last one is precise execution. इंट्राडे में क्या होता है कि according to me, your execution is as important as your analysis when you are an intraday trader. Why? Because many of you must have experienced this thing that आप कोई ट्रेड में है और आपका टारगेट हिट हो रहा है, बट आपने सिस्टम में ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ है, तो आपको मैन्युअली ऑर्डर प्लेस करते करते तक टारगेट हिट होके वापस से रिवर्स भी हो जाएगा प्राइस, स्पेशली इफ यू ट्रेड बैंक निफ्टी और एनी वॉलेटाइल इंडाइसेस और एनी वॉलेटाइल ऑप्शंस. So it can happen to you. So that is why your execution should also be very, very, very precise. So else, if you are not very fast with your fingers, it is always advisable to have the limit orders already set into your terminal, or otherwise, if you are very pro with the execution, you should be, you should have your phone or you should have your fingers on the your keyboard all the time. So that is how the intraday trading is done. All right, so next is a small exercise to understand if those trades are intraday or not. So in this, the first entry is taken at 9:15 a.m. and the exit is taken at 9:17 a.m. Just 2 minute का trade है. ये intraday है? Yes, it is intraday. Next trade में क्या हुआ है कि सुबह 10 बजे एंट्री लिया है ट्रेड में और 1:30 PM को एग्जिट कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया. ये इंट्राडे है. These are few hours, right? Yes, this is intraday. नेक्स्ट क्या हुआ है? 9:15 को ट्रेड में एंट्री की है राइट इन द मॉर्निंग एंड 3 PM को एग्जिट किया है. जब भी आपका मार्केट क्लोज हो रहा है 3:30 को, उसके थोड़ा टाइम पहले एग्जिट किया है. इज इट इंट्राडे? यस. अब लास्ट ट्रेड में क्या हुआ है? 2:30 PM को एंट्री की है और दूसरे दिन सुबह 9:20 AM को एग्जिट कर रहे हैं. तो ये इंट्राडे है क्या? नहीं. Even if the hours, actual market hours in this trade are lesser, but still this is not your intraday, this is a positional trade, all right? Because you're carrying your position over the night. This is not intraday. Correct? So now before we go forward and in this session, जब भी हम आगे के तरफ मूव करेंगे, we will get to know the techniques of trading intraday, all right? It will have the range trading, it will have the momentum trading, and it will have scalping as well. These days, scalping is very much into the trend. So I have included that also into the intraday trading, and it is a very big part of intraday. There are a lot of intraday traders who are scalpers. All right. So these three things we will learn in next part of the webinar. But right now we will just go through the benefits of intraday trading, or what should you expect when you are an intraday trader. So first thing is liquidity. Whenever you are an intraday trader, mostly people will choose the highly liquid options, or highly liquid index options, or highly liquid stock options to trade intraday. All right? क्यों? क्योंकि आपको एंट्री करके एग्जिट भी कुछ टाइम में ही करना है. इट विल बी वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम ट्रेड, राइट? सो जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स है, that person will ensure that liquidity is very high in that particular contract. All right? So by default, when you go to choose the strikes or the options, the liquidity will be high for the for such kind of contracts. Next is multiple trading opportunities. Because you set a shorter time frame for intraday, it can be, if you're not a scalper, according to me, 15-minute time frame is a decent time frame for intraday. All right, 15-minute and 5-minute ka combination is a good combination for having a good analysis of chart, and then finding out entries and exits based on the shorter time frame. So 5-minute and 15-minute
is a good combination. But if you're a scalper, it can be even 1 minute. Okay, so based on the time frame, अगर time frame बहुत छोटा है, तो there will be multiple trading opportunities, correct? So, as compared to the positional trader, you are going to have multiple trading opportunities. Yes, of course, the targets or the momentum that you will capture will be shorter than the bigger time frame. Next, reduced overnight risk. Reduced overnight risk में this is the biggest benefit. जो लोग positional trade carry करते हैं, if the option trade is not hedged, if the risk is not managed well, the problem can happen when next day there is a big gap up or big gap down which is against your trade, right? So when you're an intraday trader, you're not losing that control, because whenever you're into your trade, market hours are, market is open, you have still 100% control over your position. Whenever you will feel that you want to book profit, or if it is going just way below your highest capacity of having the loss, you can cut off your positions. But in the overnight position, you lose your control after the market hours, and next day at 9:15 anything can happen, right? So the intraday traders do not really face this risk. Next is lower capital requirement. When you trade intraday, you can have the margin benefit, right? You don't have to pay the whole margin for having a position. You get the margin benefit from the broker. So in the intraday trading, the capital requirement is comparatively lower. And the last one is flexibility. Whenever you're an intraday trader, you can you don't have to actually sit 9:15 to 3:30 in front of the screen. Let's say I have a kind of a profit expectation every day. Let's say अगर मैंने सोचा कि मुझे 5,000 डेली बनाने हैं, उसके बाद I'll not sit in front of my screen. तो अगर वो पहले 1 घंटे में बन गया, तो बाकी का टाइम मुझे फ्री मिल गया. So that kind of flexibility intraday traders tend to have. तो उससे क्या होता है कि पोजिशनल ट्रेडर ये नहीं कर पाते, बिकॉज देयर पोजिशंस आर ऑलवेज ओपन, राइट? एंड इफ द रिस्क इज नॉट मैनेज्ड, देन ओनली दे विल फेस दैट प्रॉब्लम. बट इंट्राडे ट्रेडर्स का क्या है कि जो जो उनका ट्रेड होता है वो एक्टिव कुछ मिनट्स के लिए या फिर कुछ आवर्स के लिए ही होता है, तो उनको पूरा टाइम स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं होती है. Let's go forward. I hope that you know what are the benefits of intraday trading. Now, as I told you, we are going to discuss the intraday trading techniques. So first is range trading. See, whenever we talk broadly about market, it is said that 70% of the times market will be stuck in a range, or it will be consolidating, and only 30% of the times we will get a trending market. Okay, these days, these last few days, the picture is totally reversed, but then this is the broader picture, right? So as an intraday trader, we need to have both kind of strategies. Let's say if market is range bound, I cannot let this day go. If I'm a full-time trader, I cannot let just 2-3 days of the week go, because there is no trend. So meri to opportunity loss ho gaya na. So I, as a intraday trader, should have the trading strategies based on the range bound market, and the trending market as well. So we will discuss the range trading. Range trading is the strategy of finding entry and exit points within consolidating market. That is a market that constantly trading between two known lines of support and resistance. Okay. So when we talk about the range trading, the support and resistance, finding support and resistance is very, very important. And the next is momentum trading. Momentum trading is whenever the market is trending, जब भी कोई up move आ रहा है, down move आ रहा है, 1-1.5% का index में move है. So those kind of days come into the momentum trading. All right. And the next is scalping. Scalping में आपका बस जो time frame होगा वो super short होगा, और उसके basis पे आप you will take small positions for a very small price action. ओके अब इसमें बेनिफिट क्या होता है? मोस्टली स्कैल्पर्स इसको कवर अप करते हैं विथ अ हायर क्वांटिटी. ठीक है, अगर आप मतलब नॉर्मली जो ट्रेडर 50-60 पॉइंट्स, लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, सो लेट्स से कि जो नॉर्मल ट्रेडर है वो 50-60 पॉइंट्स को टारगेट करेगा, तो स्कैल्पर उसको 15-20 पॉइंट्स में अपना पोजीशन कवर अप कर देगा. बट प्रॉफिट कैसे मैनेज होगा? अल्टीमेटली जो व्हाट एवर यू आर गोइंग टू टेक होम,
how you are going to manage that profit with the help of higher quantity. ठीक है, तो scalpers normally have a comparatively bigger quantity for scalping because there are going to be multiple trades and the targeted price momentum is very short. All right, so let's go forward and let's talk about the range trading. So whenever we are going to have a strategy or whenever we are going to trade for a range, what are we supposed to do or what are the steps that we should follow? ठीक है, ऐसा क्या steps है जो हमने follow करने चाहिए while trading a range bound market? So first of all, recognizing range bound market conditions. तो सबसे पहले आपको ये specify करना है कि market range bound है या फिर trending है. ठीक है, next identifying support and resistance levels based on option chain or charts. अब दो there are two options that you get. You can either use the charts or you can use the option chain as well to take out the support and resistance levels. Okay, I will show you both. And the last is timing entries and exits near range boundaries. ठीक है, तो whenever we are trading for a shorter time frame, timing the entries and exits is very much important. आपके पास वो plan होना चाहिए कि if this is a structure that I am seeing on a chart, इसमें मेरी एंट्री कहाँ होगी, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ सेट होगा और मेरा टारगेट कहाँ बुक करना है. अगर ट्रेड में एंटर करने के बाद आप सोचोगे कि अभी मेरी एंट्री हो गई, अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और फिर मैंने बुक कहाँ करना है, तो इट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी टू हैव एज अ इंट्राडे ट्रेडर. ओके, because by the time you decide where to book your profit or where to keep the stop loss, probably the market will go the another direction totally. All right, that can happen. So it is very important to time the entries and exits on based on your system. All right, so first identifying support and resistance based on the chart. How do you do that? First point, drawing the trend lines. See, I'm not going very deep into how do we draw the trend lines or how do we draw various chart patterns or how we read the option chain, because we have already covered those individual topics in a very detailed manner. So if you have not attended those webinars, I will request you to go on the YouTube channel of HDFC Securities and watch the recording of previous webinars. So you will get the detailed idea of all these small but important topics. All right. So I'm just going to cover this in a consolidated manner because we have covered the individual topics already. So when we talk about taking out support and resistance based on the charts, first thing is drawing the trend line, drawing a right trend line. So इसमें एक criteria होता है कि whenever you draw a trend line, you have to at least touch 2 points, okay? And you should try to touch maximum touch points of a high or low points of the candlestick. So जितने ज़्यादा touch points को आपकी trend line cover करेगी, उतनी ज़्यादा वो trustworthy होगी. Okay, next, identifying parallel support and resistance. So by this I mean that taking out the horizontal support and resistance. Simple, मतलब जो एक ऊपर वाली लाइन निकल के आएगी, नीचे वाली लाइन निकल के आएगी. सपोर्ट मतलब क्या है, जहाँ पे मार्केट नीचे आके बार बार सपोर्ट लेगा या फिर बार बार जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स बनेंगे और वहां से रिवर्स होगा. सो दैट लेवल इज नोन एज सपोर्ट. सेम वे जब भी मार्केट ऊपर या जो भी आप स्टॉक देख रहे हो, इंडेक्स देख रहे हो, वो ऊपर के तरफ जाने के बाद एक सर्टेन लेवल पे एक हर्डल फेस करता है जहां पे मल्टीपल आपके कैंडल्स बनेंगे और वहां से रिवर्स होके नीचे आने को इट विल ट्राई. सो दैट इज योर रेजिस्टेंस. ऑलराइट, सो ईदर हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है या फिर ड्रॉइंग पैरेलल चैनल्स टू स्पॉट रेंजेस विद इन ब्रॉडर ट्रेंड्स. तो इसका क्या मतलब है कि जरूरी नहीं कि मार्केट टोटल फ्लैट हो. ठीक है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि लास्ट 2-3 मंथ से वी आर सीइंग अ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड. ठीक है, बट इट इज अ ब्रॉडर ट्रेंड. इसका मतलब ये नहीं कि डेली हम लोग 1-1.5% का अपमूव देख रहे हैं. दैट इज नॉट हैपनिंग. सो inside a broader trend there will be some days when the market will be comparatively range bound. ठीक है, तो ऐसे में कंप्लीट फ्लैट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के दो लाइंस नहीं मिलेंगे. यू विल गेट अ पैरेलल चैनल. ठीक है, एक कुछ स्लैंटिंग टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. दैट यू कैन ड्रॉ विद द पैरेलल चैनल्स ऑन द चार्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट
आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हाईएस्ट कॉल एंड पुट का ओआई आपको स्पॉट करना है। whenever there is a highest call OI, it is your resistance, ठीक है, you get your resistance on the call side, and whenever there is a highest put OI on your right hand side, it is your support, ठीक है। तो वो दो लाइंस या फिर वो दो लेवल्स आपको, you have to take out those two levels, and lastly you have to confirm those two levels with the chart also, ठीक है, because at the end you are going to take the entries and exits based on the charts. So it is well and good if you look at the option chain, you get the clues beforehand, but for the intraday I will suggest that it is always better to have the chart in front of you, because you will get to know the candlestick patterns and all of that, and you will get the extra clues from that. All right, so if you look here, this is Nifty's chart. All right, this is a 5-minute time frame that I have set, and if you can see, this is a parallel channel that was forming. All right from the 11 o'clock to until the end of the day, it was in this parallel channel. All right, so these kind of structures we have to find out, even if the market is into a broader trend, and but for that particular intraday there is a रेंज बाउंड मोमेंटम, ठीक है। तो ऐसे में आपको एंट्रीज और एग्जिट्स कहाँ पे मिलेंगे? अब मैंने एंट्री नीचे की तरफ लिखा है और एग्जिट ऊपर की तरफ लिखा है। व्हाई? बिकॉज द ब्रॉडर ट्रेंड इज अपवर्ड्स, राइट। अगर आप ये पैरेलल चैनल भी देखोगे, ये अपवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं मतलब फॉर माई ओन सेफ्टी आई एम नॉट गोइंग टू टेक पुट्स, ठीक है। इफ आई एम अ बायर आई एम गोइंग टू बाय कॉल ओवर हियर, सेल हियर, देन अगेन एंटर ओवर हियर, आई विल सेल ओवर हियर, ठीक है। तो कॉल्स में मैं ट्रेड करूंगी, बट आई विल नॉट टच पुट्स ओवर हियर, बिकॉज द ओवरऑल ट्रेंड इज ऑन द अपवर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी find out the entries and exits on a shorter time frame whenever there is a range bound market. Stop loss can be, अब ये अगर पूरा आप मोमेंटम देखोगे ना, this is only 50 points momentum, okay, 50 points price action. सो अगर आप 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी इस लेवल के नीचे रखोगे तो भी इट विल बी मोर देन 1:1 रेशो फॉर योर रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ योर ऑप्शन चेन ऑफ बैंक निफ्टी, ओके। नाउ इफ यू सी, I'll just give you an example of how do we find the support and resistance in option chain as well. See, if you can see the call side data on this side, put side data on your right side, and in the middle there is a column for strikes which is common for the both side. Now जब भी हम कोई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं मार्केट में, तो आपका वो कॉल साइड में मिलेगा और सपोर्ट आपका पुट साइड में मिलेगा, ठीक है। तो आपको एटीएम से, एटीएम मतलब जो आपका करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके आसपास का नियरेस्ट जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, उससे हमको आगे पीछे देखना है कि हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है, कौन से कॉल और पुट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 47,300 के पुट पे हाईएस्ट ओआई है, एंड 47,000 the support is at 47,300 and the resistance is at 47,400, ठीक है। तो ये 100 पॉइंट्स का रेंज मुझे मिल गया। अब हमको स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है? लेट्स से इन दिस कंडीशन you can trade the calls or puts both, because the numbers are equal both the sides, but strike कौन सा चूज करना है? we should go with ATM और ITM, ठीक है। एट द मनी और इन द मनी के साथ जाना है, बिकॉज trading OTM options is a bit risky, okay. So this is how you find out the support and resistances based on the option chain, and you should always go and confirm it on the chart as well. All right, so this is how we trade the range. Now next is momentum trading. Momentum trading में हमें क्या करना है? First, recognizing trending market based on trend indicators. Next, confirming the trend strength, and third is timing entries and exits. So सबसे पहले we have to find out if the market is trending or not, ठीक है। अब जो हमने लास्ट स्क्रीनशॉट देखा चार्ट का,
उसमें हमने पैरेलल चैनल देखा था, बट वो उसको हम ट्रेंडी मार्केट नहीं बोल सकते, इट वाज स्टक इन अ चैनल, ठीक है। एक भी कैंडल ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा मोमेंटम दे दिया, या जो जो ब्रॉडर अप ट्रेंड था उसका स्ट्रेंथ नहीं था, ठीक है। तो वी कैन नॉट कॉल इट एज अ मोमेंटम ट्रेडिंग, दैट वाज अ रेंज बाउंड प्राइस एक्शन, ठीक है। So first of all, we have to find out if the market is trending or not. Next, हमको जो भी ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन वेरियस इंडिकेटर्स, ऑलराइट। एंड द लास्ट, हमको एंट्रीज और एग्जिट्स फाइनलाइज करने की, किस पॉइंट पे एंट्री होगी, किस पॉइंट पे एग्जिट होगी, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। So trend indicators which can be used independently or in combination with other indicators are moving averages, super trend, parabolic star. These are just examples, all right. These are not the only indicators that we can use, but these are some good indicators which give you good results, ठीक है। तो ये आप इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हो, एक एक इंडिकेटर भी यूज हो सकता है, या फिर इसके आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें कॉम्बिनेशन है, ऑलराइट। नाउ ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और ये जो लाइंस आप देख रहे हो, रेड एंड ब्लू, दीज आर द मूविंग एवरेजेस, ठीक है। सो दिस रेड वन इज 50 मूविंग एवरेज एंड द ब्लू वन इज 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। So in the last webinar we had discussed about the crossovers, right? So I'll just repeat that. जब भी कोई स्मॉलर एमए बिगर एमए को क्रॉस ओवर करता है ऊपर की तरफ, तो वो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है। और जब भी कोई स्मॉलर एमए बिगर एमए को नीचे की तरफ क्रॉस डाउन करता है, तो इट्स अ ब्रेक डाउन, ठीक है। उससे हमें ट्रेंड पता चलता है, ऑलराइट। सो दिस टेक्निक वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी यहाँ पे हमारा क्रॉस डाउन मिला, राइट। हमें जो कंफर्मेशन कैंडल है उसके एंड पे वी कैन डू एंट्री, ठीक है। सो दिस इज आवर एंट्री एंड द इनिशियल स्टॉप लॉस, where can we put the stop loss in this particular thing? At the top of the breakdown candle. So जो भी कैंडल आपका दोनों एमएस को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, जो भी आपका ब्रेकडाउन कैंडल है उसका टॉप, बॉडी नहीं, शैडो का टॉप, ठीक है। तो उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, वो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा जब भी आप ट्रेड में एंटर करोगे, ठीक है। और ये कंफर्मेशन कैंडल का जो एंड होगा, दैट इज योर एंट्री, ऑलराइट। सो इसमें जब भी हम टारगेट के बारे में बात करेंगे, अब हमने यहाँ पे दो एमएस का कॉम्बिनेशन तो किया ही है, 50 प्लस 20 एमए, बट वी हैव ऑल्सो टेकन द RSI एज वेल, ठीक है। सो RSI से हमको क्या कंफर्म करना है कि RSI कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, राइट, कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग है। सो उससे भी हमको पता चल रहा है कि देयर इज अ सेल ऑफ, बट RSI को 20 या 30 के इतने नीचे के लेवल तक नहीं जाना है, बिकॉज दैट इज अ ओवरसोल्ड जोन, ठीक है। RSI शुड बी अराउंड 50, ठीक है, 50 और 40, दैट इज अ ओके लेवल इफ यू हैव टू एंटर इनटू अ शॉर्ट ट्रेड, ओके। Now, when we enter into this particular strategy, where should we book? Target क्या होना चाहिए? First of all, we can keep the 1:1 ratio, मतलब जितना भी आप ये रिस्क ले रहे हो इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। If let's say these are 50 points, we can target for the 50 points. But see, this is momentum trading, right? This is not range bound trading. So there is very high probability that we will get a bigger momentum on that direction. So इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत हेल्पफुल रहता है। सो व्हेनेवर आई एम नॉट बुकिंग माय पोजीशन, बट लेट्स से दैट आई एम इनटू अ सर्टेन प्रॉफिट, so at that time it is always good to lock some profit with the trailing stop loss. So trailing stop loss isme we can consider as a bigger MA. In this case it is 50 MA, all right. So this is how we trade the momentum or the trending market, okay. Now let's go forward and let's talk about scalping. अब scalping सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, because it does not require very high level of analysis. You just need to be very good about your execution, and you need to have a very good system, okay. These are the main 2 points, all right, and of course capital. So
when you are scalping or when you are a scalper, these are the 3 steps that we should ensure. First is recognizing a trade setup on a very short time frame. Next is confirming high liquidity, and third, timing entries and exits along with a tight stop loss. So when we talk about scalping, what are the key components? First is very short time frame that we saw in this first step itself. Okay, एकदम छोटे, let's say 1 minute, 3 minute और 5 minute, ये टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेड सेटअप होना चाहिए. ठीक है, यू शुड ऑलरेडी नो कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर अगर चार्ट पे बना तो हियर विल बी माय एंट्री, दिस विल बी माय टारगेट एंड दिस विल बी द स्टॉप लॉस. ओके, यू शुड हैव दैट प्लान रेडी इनटू योर माइंड. नेक्स्ट इज हाई वॉलेटिलिटी. अगर बिल्कुल फ्लैट मार्केट होगा तो स्कैल्पिंग में भी इट विल बी वेरी रिस्की, बिकॉज अगर वॉलेटिलिटी नहीं है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे. फ्लैट चल रहा है मार्केट तो आप कहाँ पे टारगेट बुक करोगे, कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, कहाँ एंट्री लोगे, वो आपको ट्रेड सेटअप ही नहीं बनेगा इफ देयर इज अ फ्लैट, वेरी फ्लैट मार्केट. ओके, सो हाई वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, गुड लिक्विडिटी. लिक्विडिटी बहुत जरूरी है when you are a scalper, is because your quantity is going to be higher, correct? So when quantity is higher, let's say you got into a trade but you are not able to exit only because there are not sufficient sellers, right? Or if not, there is not sufficient counterparty. So that is why ensuring high or good liquidity is very much important. Next, bigger quantity. As I said, इसमें the scalpers tend to target very small price action, so that is why they generally keep the bigger quantity. And last is quick execution. As I told you, the very high need of having a good or quick execution is the most important thing into the scalping. All right, so फर्स्ट हम लोग को क्या करना है कि जो भी अभी तक हमने जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखी या फिर जो मोमेंटम ट्रेडिंग देखी, तो उसमें मैंने आपको अंडरलाइन के चार्ट पे समझाया कि कहाँ पे एंट्री हो सकती है, व्हाट कैन बी अ प्रोबेबल सेटअप, राइट? बट इनटू स्कैल्पिंग we don't really get that much time to look at the underlying first, then look at the option after that, right? And then thinking of the entry, exit or stop loss, correct? So unlike initial two things, in this particular technique, we are going to directly see the strategy based on the option chart itself. All right, so first of all हमको क्या करना है कि जो underlying होगा, in this case the bank nifty is the underlying over here. ठीक है, जो इंडेक्स है या जो कुछ भी स्टॉक होगा जो आपका अंडरलाइन होगा, उसका आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है कि उसका व्हाट इज द ट्रेंड, ऑलराइट, व्हाट इज द ब्रॉडर ट्रेंड. उसके लिए आप 15 मिनट लगा सकते हो, 5 मिनट लगा सकते हो, ऑलराइट. और आपको एक ट्रेंड का आइडिया लगाना है कि एक ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट? तो अगर मैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगी तो बेस्ड ऑन द ट्रेंड लाइन, दिस इज अ अप ट्रेंड इन बैंक निफ्टी इन दिस पर्टिकुलर चार्ट. ओके, so now I'm going forward, and if you see, this is a chart of bank nifty 47,900 call. ठीक है, so scalping में मुझे वहां पे एंट्री एग्जिट डिफाइन नहीं करनी है. स्कैल्पिंग में मैं ऑप्शन के चार्ट पर एंट्री एग्जिट डिसाइड करूंगी. ठीक है, सो अंडरलाइन के चार्ट से आई गॉट टू नो दैट देयर इज अ ब्रॉडर अप ट्रेंड. ठीक है, सो स्कैल्पिंग में भी आई एम गोइंग टू चूज द कॉल ऑप्शन. ठीक है, इट कैन बी बेस्ड ऑन द बायर एंड सेलर. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव. ओके, so I'm going to choose the call option over here, and I'm going to enter into call, book it, enter into call, book it, because it is a broader uptrend. Okay, I'm not going to touch put in this particular uptrend. All right, even if I'm a scalper, still I need to think about my own safety, correct? Now if you look at this particular setup, in this also I have used the combination of MAs. Moving averages are very good when it comes to the indicators, and lot of traders use the moving averages, which is why it gives a very good result. जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना ही वो इंडिकेटर्स आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे, राइट? क्योंकि
ज्यादा, उतने ज्यादा ट्रेडर्स उसको देख के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट? सो according to my knowledge and according to my experience, moving averages are, you know, it is a good example of indicator. All right, so in this particular chart, it is a 1 minute time frame, okay, and it's a chart of Bank Nifty 47,900 call, and the red line that you are seeing is a 10 MA and blue line is 21 MA. So now because I'm shifting to scalping over here, I'm not going to have very big moving averages, ठीक है? जितना ज्यादा नंबर का मूविंग एवरेज आप लगाओगे उतने ही कम आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अगर इसमें मैं 20-50 का मूविंग एवरेज लगाऊंगी तो उसमें क्रॉसओवर्स मुझे कम मिलेंगे। 50-100 का लगाऊंगी उससे भी कम मिलेंगे। 100-200 का लगाऊंगी उससे भी कम क्रॉसओवर्स मिलेंगे। So if I want to have multiple trading opportunities into scalping, first thing I should have a smaller time frame on my chart, and the second one, if I'm using moving averages, my moving average combination should be smaller. Okay, so same way यहाँ पे भी मैं क्रॉसओवर्स को टारगेट कर रही हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे 10 मूविंग एवरेज ने ब्लू जो भी अपना 21 मूविंग एवरेज है उसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया, बट हियर आई एम नॉट गेटिंग अ कंफर्मेशन, राइट? कोई भी ग्रीन कैंडल का ऊपर मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है डबल, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज क्रॉसिंग अपवर्ड्स but next is a red candle, so this is not a confirmation. So here this one is crossing the red line and this one is a confirmation, ठीक है? So confirmation के end पे हम लोग को entry करनी है, alright? और इसमें scalper का एक basic attribute ये होता है कि you are not going to hold the trade for a very long time, ठीक है? So that is why you should have the target already set. So इसमें एटलीस्ट 1:1 का रेशो मुझे मेंटेन करना है। तो ये अगर आप क्या बोलते हो, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन, वेयर विल बी माय स्टॉप लॉस? माय स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी दिस लोअर लाइन और just 10-15 points below this line, because this particular price action is very flat over here. But जो भी आपका बिगर एमए है उसके नीचे 10-15 पॉइंट इज a good, it's a decent stop loss. So मेरा 1:1 अगर if मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है तो मेरा टारगेट भी 10-15 पॉइंट्स का होना चाहिए। फॉर अ सेफर साइड आई विल टेक एज अ 20 पॉइंट्स, ठीक है? बट अगर आप ये कैंडल्स देखोगे अगले 2 मिनट में ही दिस ऑलमोस्ट रीच टू 200, दिस एंट्री इज अराउंड 72, okay? This entry is around 72 and my stop loss is coming at 59, and if I go by 1:1 risk to reward, my first target should come at 92, but in no time it reached to 200. There are two reasons. First, because we followed the the right direction. The second one is we already looked at the underlying asset and then we analyzed it, right? And we took out the broader trend, and based on that we are only trading into calls, okay? We are not trading into puts, correct? So which is why जब भी हम ट्रेंड फॉलो करते हैं तो ऐसे ट्रेंड फॉलोइंग में कभी कभी स्कैल्पर्स के पास भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं कि you get a very good momentum within minutes, ठीक है? So this is one opportunity. It is just 1 minute time frame, all right? The second one is अगेन यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हो रहा है, 10 MA आपका 21 MA को क्रॉस कर रहा है, करेक्ट? नाउ यहाँ पे आपका कंफर्मेशन कैंडल बन रहा है। कंफर्मेशन कैंडल के एंड पे हमने एंट्री करी। अब यहाँ क्या हो रहा है ना कि आपका अगर ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, दिस इज योर आइडियल स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस, बट ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है इस बार, करेक्ट? तो आपका 10-15 पॉइंट का अगर आप इफ यू टेक आउट 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड, it will not support, or it is quite difficult to have this much kind of a momentum into within minutes, right? So if I look at the numbers, my entry is coming at 257, okay? My stop loss is coming at 178. ये जो line का number है ना, that is 178. So that is my initial stop loss, okay?
So according to 1:1, I should have the first target of 337, but within minutes it reached to 399. So this is how scalpers sometimes get a very good momentum. Okay, so but if if you're a safe trader who doesn't believe into luck, or if you want to be safe even into scalping, you should always have 1:1. If you're following 1:1 risk reward, you should have the orders into the system. ठीक है, तो अगर 337 का मेरा फर्स्ट टारगेट था, तो 337 पे मेरा ऑर्डर बुक हो जाता, एंड मतलब उसके बाद ये मोमेंटम आता, तो आई वुड हैव मिस दैट वन. बट ये जनरली हेल्प करता है कि अगर ऑर्डर्स आपके ऑलरेडी सिस्टम में होते हैं, तो जब भी ऐसे वाइड मूव्स नहीं आते हैं, छोटे छोटे मूव्स आते हैं स्कैल्पिंग में भी, तो इट विल हेल्प यू टू बुक द टारगेट्स प्रॉपरली. और whenever there is a good trend, whenever there are very good momentums like this, you will be always lucky, let's say, in such kind of a situation. Okay, so let's go forward. I hope you understood this particular setup for the scalping. All right, so let's go forward, and now let's understand the discipline part which is there in the intraday trading. So we have seen what are the benefits and what are the techniques of trading into intraday options, but there is a very big chunk that we should give to this disciplinary part as well. All right, so there are a few points. मुझे पता है कि आप लोग को ये सारे पॉइंट्स पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बारी आई विल रिपीट दीज ऑल पॉइंट्स टू यू, वो कम है. ओके, इतना इंपॉर्टेंस है ये डिसिप्लिनरी पॉइंट्स का. ऑलराइट, सो फर्स्ट इज स्टॉप लॉस. आप स्कैल्पिंग करो, ट्रेंडिंग ट्रेड करो, या फिर आप रेंज बाउंड ट्रेड करो, बट इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर कोई भी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट इन द सिस्टम. ओके, आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है कि अच्छा इस लेवल पे आएगा तो मैं काट लूंगी, ऐसा नहीं करना है. You should have that level into your terminal. Okay, second, managing emotions. Positional trading, as compared to positional trading, it is very difficult to manage the emotions in the intraday trading, because first thing, you will be having multiple trades. Okay, so let's say कि आपका दिन स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट ट्रेड में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यू शुड नॉट let that feel you down, or just lose your morale. So उसके आगे के जो ट्रेड्स होंगे उस पे वो इफेक्ट करेगा. ऑलराइट, सो मैनेजिंग द इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग. नेक्स्ट इज रिस्क रिवॉर्ड. मल्टीपल ट्रेड्स करने हैं, तो मल्टीपल ट्रेड्स में आप यू विल नॉट हैव काउंट के कौन से ट्रेड में मेरा कितना स्टॉप लॉस गया, कौन से ट्रेड में हाउ मेनी ट्रेड्स आई हैव हिट द टारगेट्स. तो वो आपको मैन्युअली समझने में इट विल बी डिफिकल्ट. सो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड इनटू एवरी ट्रेड. ठीक है, तो आपके एक्यूरेसी के हिसाब से आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट इज पोजीशन साइजिंग. जो इनिशियली जो मिस्टेक्स होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, उसमें क्या होता है कि जो भी आपका कैपिटल होता है वो पूरे कैपिटल के साथ लोग एक ही ट्रेड ले लेते हैं. दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच. Okay, so right position sizing is very much important. Let's say if you have 5 lakhs, you should divide it into smaller chunks for different trades. Okay, तो अगर एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तो बाकी के 4 ट्रेड में आप there is a possibility of you having profits. All right, अगर एक ही ट्रेड आपने पूरे कैपिटल के साथ लिया और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका वो it will take out bigger percentage of your whole capital, right? Next is trading journal. Positional traders को trading journal की उतनी जरूरत नहीं होती है, but intraday traders को बहुत importance होता है trading journal का, because आपके trades multiple होते हैं. तो market hours में हर एक trade के बारे में बैठ के सोचने को time नहीं होता है, but after the market hours, if you are really a serious option trader, you will go back and analyze your own trades. So based on that, you will get to know कि कौन सा ट्रेड impulsive हुआ, कौन से ट्रेड में
what learning was there, so that you will get to know if you only manage your trading journal. And the last one is no over trading. सो ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत बार आपका जो प्रॉफिट दिन का रहता है वो हो सकता है कि चला भी जाए एट द एंड ऑफ द डे. सो यू शुड हैव स्पेसिफिक टारगेट्स ऑफ your number of trades, or your daily limit of loss or your daily limit of profit. So based on that you will stop trading after your certain limit is crossed. All right, so these are the points which I thought are very important to share from the perspective of the intraday options trading. All right, so this is all in today's session about the intraday trading, intraday options trading. I hope you got to you got few answers to your queries about the intraday options trading, or you got some insights through the techniques that we discussed for the range bound or trending or the scalping. All right, so if you have now any questions, you can let me know in the question box, and I will try to answer as many as I can. All right. So before I take any questions, I will just mention over here that you know whenever we conduct these webinars, just after the webinar is over, we upload this recording on the YouTube channel of HDFC Securities. So you can go and access this current webinar. You can go and access all the previous webinars, and you can learn from that. So someone has asked about the limit order. Whenever you are into a position, and if you want to set a order already, let's say कि मैं एक ट्रेड में हूँ, मेरी एंट्री इस ऑप्शन में 100 पे हो चुकी है. ऑल राइट, अब इसमें I'm into profit and now I want to book it, but my execution is not so fast कि मुझे एकदम जब प्राइस आएगा तब मैं स्वाइप नहीं कर पाऊंगी, या फिर जब मार्केट ऑर्डर पे हम लोग स्वाइप करते हैं उसमें थोड़ा सा स्लिपेज आ जाता है. राइट, सो दैट इज व्हेन द लिमिट ऑर्डर्स आर गोइंग टू हेल्प यू. सो लिमिट ऑर्डर में क्या है कि मान लो कि अब उसमें मोमेंटम चालू हो गया है, टारगेट के तरफ मेरा ट्रेड बढ़ रहा है, और लेट्स से कि आई वांट टू बुक एट 150. तो 150 का लिमिट ऑर्डर, whenever we open the order pad into the app or into the terminal, वहां पे आपको एक लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है. ओके, तो उसमें आप जाके लिमिट जो भी लेट्स से इफ आई वांट टू बुक एट 150, तो 150 का नंबर और डिजायर्ड क्वांटिटी वी कैन पुट, एंड व्हेनेवर द प्राइस इज गोइंग टू हिट 150 मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज सेफर देन द मार्केट ऑर्डर्स. Okay, so someone has asked how to place a stop loss when trading index. So if I talk about InvestRight or HDFC Sky, both the apps, when you are into a trade, let's say you have entered, all right, and then when you are into position, उस position पे जाने के बाद जो भी exit रहता है ना, sell order पे जाके SL को अगर आप select करोगे, SL में जाके you can put the trigger price. Trigger price वो होता है कि आपका जब भी लेट्स से 100 पे आपने एंट्री करी है, ऑलराइट, और आपका स्टॉप लॉस है 80, ठीक है,
तो 80 आपका स्टॉप लॉस का जो बॉक्स होगा उसमें जाएगा, और ट्रिगर मैं 80 से थोड़ा ऊपर डालूंगी, लेट्स से 80.5 और 81, तो मेरा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर होगा वो 81 पे एक्टिव हो जाएगा। तो 81 टू 80 में जहां पे भी लिक्विडिटी होगी वहां पे मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वंस यू आर इनटू अ पोजीशन यू कैन गो एंड पुट अ स्टॉप लॉस with going into the sell order or square of order. Simple moving average, there is a question, one should use simple moving average or exponential moving average. से simple moving average में let's say अगर आपका 50 का MA है, simple moving average है, तो last 50 candles को equal importance रहेगा। exponential में ये रहता है कि your recent price action gets the higher weightage. All right. So exponential moving average will also give you good results, but because simple moving averages are very much famous into the market, the participation is very higher, and because of that, it will also give very good results. So both, based on your own what you call trading system, you can choose the SMS or EMA. But according to me, into simple moving average, there is a bigger participation of the trading community. Okay, there is a very good question. Within intraday trading also, please inform what or when would be a no trading zone. So there is a thing called no trading zone. Okay, so one, we categorized market into two things or into two kinds. Either it is going to be range bound or it is going to be trending. Okay, तो range bound market के लिए भी it should respect a specific support level or a specific resistance level, then only it will be a range bound, right? You should get a proper range out of it. Or into the trending market, what should happen? It should give the one side directional move. Okay, but when both these things are not happening, in 1 2 3 candles it is stuck into the range, in next candle it is giving an erratic momentum on the upside, next time it is coming downwards. So if you are seeing such kind of the price action where you cannot categorize the market into the range bound zone or into the trending zone, that is when you should not trade. Okay, that is your no trading zone. All right. So until you come back into a broader range bound zone or into a broader breakout or breakdown, until that time, we should wait. The moving averages that I used are the simple moving averages. Excuse me. So in detail, we are coming up with a session to talk about the stop losses, to show the screen, to talk about the trailing stop losses. So we will get a proper separate session for that. All right. So if you want to see screens and you want to know the journeys, we will have that particular webinar for the stop losses and all the risk management factors.
Someone has asked about the different time intervals to draw the trend line. So it is not specific that you should use 15-minute or 5-minute or 3-minute. Whatever time frame you are following, on that time frame itself, you should draw the trend line. Okay, otherwise it will have no use. But whatsoever time frame, according to me, 15-minute time frame for the intraday gives good result for the analysis part, right? So it can be even 5 minutes also. I've drawn many trend lines and it has given me good results. So 5 minute, 15 minutes are good time frames for the intraday for drawing the trend lines. So someone has asked, will I get any suggestions from HDFC Securities, which option to buy or what time to sell? So on our apps, both InvestRight and HDFC Sky, you get the research recommendations of, you know, the technical picks, the F&O picks, right? You will get to know when to buy, when to exit, all right? So all that research recommendations you get on the HDFC apps. So yes. All right. So I think there are many more questions, but I have a limitation of time. So right now I will have to stop over here. But if you have any questions, you can get in touch with us through our social media handles, or you can write to us through emails. So right now I will have to stop over here, and I thank you all to attend this webinar. And for the next webinars, stay tuned. We will send an email, or we will put that into our Telegram channel, which is on the name of HDFC Securities. All right. You will get the push notifications as well. So stay tuned and attend the next webinars as well. If you have missed the previous webinars, go on to the YouTube channel of HDFC Securities and watch the recordings. So thank you so much and see you next time. Thank you.